तो रहे मजे। Bhagalpur, a town situated on the banks of the river Ganga. In eastern Bihar, it is a very old town. And once upon a time was a thriving river port. The people here claim that their silk weaving tradition goes back to epic times, as the city is mentioned in the Mahabharata. However, the present history of the Bhagalpur silk industry is about 500 years old, with skills passed on to the craftsmen over many generations. मेरा नाम है अजमल राही और ये काम में जो है मेरा अब्बा जो है यही काम करते थे, मेरा दादा भी यही काम करते थे। उसके बाद जो है फिर हम उसको कर रहे हैं और ये लोकल काम जो हम लोग कर रहे हैं, लोकल काम हम लोग जो कर रहे हैं, दूसरे पार्टी के यहाँ से जो है महाजन होता है, शेयर से लेते हैं हम लोग सूता बना करके, उसको सारा मटेरियल वही देता है, हम लोग बना करके देते हैं, उसका मजदूरी हम लोगों को मिलता है। Once considered as the biggest trade center of eastern India, the city known as the Silk City is famous for its unique tradition of Tussar or Tussar. Fabrics produced in the city are famous both at the domestic and the international market. Bhagalpur cluster ranks the second highest, next to Karnataka in the production and exports of silk fabrics. उमड़े घुमड़े रहयो सोघन गरजत बादर विमान, गरजत बादर विमान, बंसे धुन सुमन झार बाजत सी। ये सत्य स्वयं सिद्ध होता है, को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। एक हैंडलूम चला करके पिताजी ने हम लोग को कॉलेज तक पहुंचाया। फिर क्या कहते हैं, इंटर में जाके अब फिर पढ़ नहीं सके। आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि नाम कटवाना पड़ा या काट देगा। सिल्क भी बना लेते हैं, फाइन यार्न का भी काम हम लोग लोधीपुर में कर लेते हैं और मोटे यार्न का भी, कोर्स यार्न का भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ 2 झाँप से प्लेन वीव से लेकर के मल्टी ट्रेडल वीव का काम होता है। 12 पैडल 16 पैडल तक का काम होता है हमारे लोधीपुर में। Legend has it that silk was discovered 5,000 years ago by a Chinese princess when a cocoon fell into her teacup. In India too, silk has a long history, where it is considered a symbol of royalty and prestige, a pure fabric used for all religious, ritual and ceremonial occasions. सब सखियां मिल पैंग बढ़ाओ लेके तान, दीम दीम ताना दे रे न धनी, दीम दीम ताना दे रे न।
archaeological discoveries in Harappa and Chanhudaro suggest that silk, employing filament from forest silkworm species, existed during the time of the Indus Valley Civilization, dating between 2450 BC and 2000 BC. Scanning with a microscope has revealed that some fibers were spun after the silk moth was allowed to escape from the cocoon, similar to the Ahimsa Tussar silk promoted by Mahatma Gandhi. In the 16th century, the process of manufacturing Tussar silk started in the region of Bhagalpur. The knowledge of manufacturing in the period became a way of life of the inhabitants of the region. This tradition suffered a decline in the 19th century and was revived during the freedom movement with the production of khadi silk. Since several decades, Bhagalpur is globally renowned as a manufacturing center of various qualities of silk fabrics. In the international market, it is especially recognized for the production of silk furnishing, both heavy and light textures. Tussar spun out of different stages or wastes like jhurri, danti, katiya, balkal, etc. are all regional names and are used for manufacturing silk fabrics. भागलपुरी तसर का एक अलग पहचान है। भागलपुर में मटका बनता है, तसर कटिया बनता है, तसर घिच्चा बनता है। उसके बाद ये साड़ी, तसर साड़ी में मालदही बहुत पहले हमारे पूर्वज सब बनाते थे, पर अभी नहीं बनता है। अभी हम लोग वेजिटेबल डाई में भी काम करते हैं, जिसे नेचुरल कलर निकालते हैं। प्याज का छिलका, आम का पत्ता, टेसू का फूल, गेंदा का फूल, इस सभी से हम लोग रंग तैयार करते हैं। At present, the state of Bihar, of which Bhagalpur is the principal center, produces the largest quantity of Tussar silk fabric in India. 6,694 handloom households with 3,316 looms live in Bhagalpur. The total trade of Bhagalpur is approximately 100 crores per annum, 50% comprising domestic and 50% from the export market. मैं मोहम्मद जियाउर रहमान अंसारी भागलपुर का एक बुनकर परिवार का सदस्य हूँ। हमारे दादा परदादा इस काम को करते थे, हमने भी इस काम को आज तक जो है करने का प्रयास किया है और इस काम को हम कर रहे हैं। तो साड़ी बनाने में जो वेस्टेज बर्बाद जो होता है, तो उसको सारे को इकट्ठा करके फिर ये हाथ से धागा बनाया गया, स्पिन किया गया, स्पिन करके धागा बना के और फिर कपड़ा बना दिया गया। सिल्क एक ऐसा चीज़ है कि सिल्क का कुछ भी बर्बाद नहीं जाता। तसर का कोकून सबसे पहले उसमें तसर बन जाता है। तसर बनने के बाद जो है जो वेस्ट धागा, उसका डंटी, मतलब उसको इस्तेमाल करके फिर जो ये कटिया बनाया जाता है। और आज देखिए ये कपड़ा बन के तैयार हो गया। इसका कुशन कवर भी बन रहा है और लोग इसको सोफ़ा कवर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहे थे और फिर मेहनत करते करते आज जो है एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और कम से कम जो है 12 से 15 कंट्री में हमारा माल जो है वो डायरेक्ट वे में जा रहा है। पूरे देश में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है
उसका 20% भागलपुर फुलफिल करता है। Around 100,000 people are engaged in the work of separating silk threads from cocoons and spinning the yarn to weave into cloth. Tussar silk is considered more textured than mulberry silk, but it has shorter fibers, which makes it less durable. It has a dull gold sheen. As most of the cocoons are collected from the forest, it is considered by many as a forest product or Vanya silk. तसर हमारा अर्जुन पर भी और आसन पर भी दोनों पर जो है सो वो खाता है, दोनों पत्ते को खाता है। और इससे तसर से ये अर्जुन के कोकून से आसन के का जो तसर है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन दोनों की वैरायटी सेम है। ये वाइल्ड होता है। हम जो है इसको जंगल में यानी वातावरण में, इसका जो अपना वातावरण है, जंगली वातावरण है, उसमें इसको हम पालते हैं। अभी फिर तसर लगाए, इससे इस पौधा से हम लोगों को बहुत फायदा है। अब की भी तसर अच्छा हम लोग उपज किए और कमाए बढ़िया, हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। About 36,000 persons, mainly members of the scheduled tribes, rear Tussar silkworms. About 80,000 kahans, one kahan equals 1,280 cocoons of Tussar, are produced in Bihar and Jharkhand, which give 160,000 pounds of real yarns and 120,000 pounds of Tussar waste. Tussar silk is also known as Kosa silk or wild silk. It is produced from larvae of several species of silkworms formed from the eggs of wide-winged yellowish-brown moths. These silkworms feed on the leaves of trees in the wild forest, as well as other trees like asana and arjun. The scientific name of these moths is Anthrea millita, and they are a part of the group known as the emperor moths or the saturnids. These moths are a true wonder of nature. Their wings are embellished by circular markings that look like a mirror. In order to kill the silkworms, the cocoons are dried in the sun. To obtain ahimsa silk, the silkworms are allowed to leave before the cocoons are soaked in boiling water to soften the silk and then reeled. Cocoons are collected, which are single-shelled and oval in shape, and are then boiled to extract the silk yarn from it. Boiling is a very important part in the manufacturing of silk, as it softens the cocoon and makes the extraction of silk easier. In conventional sericulture, the cocoons are boiled with the larvae still inside. However, if the cocoons are boiled after the larvae have left them, the silk made is then called by non-violent silk or ahimsa silk. The Tussar silk industry makes extensive use of rural and tribal labor. The women who are absorbed by the industry are trained in the production of silk. It takes them 3 days to finish a single 10-meter Tussar silk cloth. For each employed labor, the task is to weave at least 10 silk sarees in a month. यहाँ